In this video, we'll discuss about the characteristics of sound. There are three characteristics of sound: loudness, pitch, and quality or timbre. So one by one, we will discuss about these characteristics. Now we will discuss about loudness, first characteristics of sound. So if we want to define loudness, it is the measurement of sound energy which reaches to our ear. तो अगर ज़्यादा साउंड एनर्जी हमारे कानों तक पहुँचेगी वी विल हियर लाउड साउंड, और अगर कम साउंड एनर्जी हमारे कानों तक पहुँचेगी वी विल हियर सॉफ्ट साउंड. नाउ एक्चुअली लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मीन्स मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. सो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी. वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ drum which is used in school assemblies. So what happened, a person who is beating the drum, if he strike it softer, we will hear soft sound of the drum because membrane of the drum vibrates slower. धीरे वाइब्रेट करती हैं. तो मीन पोजीशन जब ड्रम बीट नहीं किया जा रहा दैट मीन पोजीशन, और जब ड्रम बीट किया जा रहा है तो वो थोड़ा अपनी मीन पोजीशन से इधर उधर होती हैं क्योंकि सॉफ्टली जब उसको बीट किया जा रहा है. लेकिन जब वही पर्सन उसी ड्रम को हार्डली बीट करता है तो क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है फास्टर मूव करती हैं अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर, तो हमें लाउड साउंड सुनाई देती है. सो अब हम दोनों कंडीशंस को, जबकि स्लोली बीट किया जा रहा है ड्रम को और जबकि हार्ड बीट किया जा रहा है, दोनों किस तरह से हम दिखा सकते हैं ना. जब स्लोली बीट किया जा रहा है तो आप देखिए मेन पोजीशन, इफ इट इज मेन पोजीशन वाइब्रेशंस आर हैज लेस एम्पलीट्यूड. दिस इज एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है. सो वी विल हियर सॉफ्ट साउंड. ओके, नाउ if the drum is beaten harder, we will hear the sound loud because amplitude is more than, we can correct it. So we can show loud sound like this. Okay, that is loudness. Second characteristic of sound, that is pitch. If we want to define it, we can say that it is the characteristic of sound by which we can distinguish between different sounds of the same loudness. Means अगर कोई दो sounds हैं जो same loudness की हैं तब भी उनके बीच pitch का difference हो सकता है because pitch depends on frequency. So greater the frequency of a sound, the higher will be its pitch. So we can take example of drum and whistle. If we produce sound of same loudness in both, but we can hear the heavy sound of drum and shriller sound of that whistle. This is because of the difference between the frequency of the drum and the whistle. Now we can see the difference between the sound of drum and whistle. So we can show like that. This is the frequency of drum of the same loudness, and this is the frequencies of whistle of the same loudness. And you can see that amplitude is same even, but frequency means here it is repeating for less time and here sound waves are repeating themselves for the more. So the difference between them is only because of frequency or repetition of sound waves. Now that is the same reason why men's voice is heavy and women's voice is shriller, because of the number of vibrations produced in their vocal cords. The third characteristic, that is quality. Even sometimes what happens, even the loudness and pitch both are same, even then we can distinguish about the different sounds. How is it possible? This is because of quality, which is also known as timbre. Actually quality depends on the sound waves forms, how it is formed. So we can say that two sounds are easily differentiated just because of their waveform. Now these are the figures of two musical instruments, मतलब the waveform of two musical instruments of same loudness and pitch, but you can see the difference between the pattern how same sound waves are formed. So इसी तरह से कोई भी दो sounds होती हैं तो बेशक उनकी loudness और pitch भी same हो, even then their quality is different. तो हर voice, हर sound की quality अपनी different होती है. तभी अगर तबला बज रहा होता है तो हमें पता है कि तबला बज रहा है, हम ये नहीं कहते कि कहीं पर फ्लूट बज रही है.
या फिर हम डिफरेंट सिंगर्स की आवाज़ को कैसे पहचान लेते हैं, कैसे मतलब अगर म्यूजिक में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ सोनू निगम, अरिजीत सिंह और एनी एल्स singer or any other singer. Now we have done with the characteristics of sound. I hope you all have understood all these.